Good evening, students. So today we are again back with our demo lecture number two of CA Inter Audit. We were covering our chapter number one, nature, scope, and objective of audit. Right. So that was our agenda wherein we covered what is the meaning of auditing, what is the objective of auditing as per SA 200. Then we jumped on to meaning of audit. Then we learned the interplay between audit and other disciplines, and then we learn the objectives of audit, right? So today let us start with our discussion and let us jump on to the scope of the audit. But prior to starting the new topic, I would want to revise what we have covered in the previous class, right? So meaning of auditing, what we have learned, it is an independent examination किसका of the financial information, किसकी of an entity, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉट प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो प्राइवेट एंटिटी हो, चाहे वो पब्लिक एंटिटी हो, किस लिए कर रहे हैं हम? with a view to express an audit opinion thereon. ठीक है, तो it is an independent examination of a financial information of an entity with a view to expressing an opinion thereon. ये definition बनी audit की. अभी हमने बोला independent क्या होता है. Independent मैंने बोला simply बस ये है your judgment or your wishes. Your judgment is not subordinate to the wishes or direction of another person. ठीक है, अब इंडिपेंडेंट रहना आपका जरूरी क्यों है? आपका इंडिपेंडेंट इसलिए रहना जरूरी है ताकि आप ओपिनियन दे पाओ, राइट? तो द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी whose financial statement are subject to audit so that he can express an opinion. तो क्या वो अपने भाई का ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता. क्या वो जिस कंपनी में उसके पास शेयर है, क्या वो उसका ऑडिट कर सकता है? तो जवाब है नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट डेवलप हो जाएगा, राइट? वो ये सोचेगा इस कंपनी के शेयर मेरे पे ही है, अगर मैं इसमें कोई ऑडिट ऑब्जर्वेशन निकाल देता हूं और जिसकी वजह से शेयर का प्राइस गिर जाएगा तो मुझे ही नुकसान हो जाएगा. तो इसलिए अगर आप किसी एंटिटी में शेयर होल्डर हो तो आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते. ये हमने कॉन्सेप्ट समझे. बिकॉज वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट. अभी इंडिपेंडेंट क्या होना चाहिए? अभी आपको इंडिपेंडेंट एक्चुअल में भी होना चाहिए और दिखना भी चाहिए, है ना? सोसाइटी को भी दिखना चाहिए कि दैट यू आर इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट शुड बी एक्चुअल इंडिपेंडेंस एज वेल एज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस. तो अभी इसमें एग्जांपल लिया था हमने अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, जहां पे हमने बोला दोनों भाई है. वैसे तो वो दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन दुनिया की नजरों में वो भाई है, तो इसलिए फिर भी वो इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस नहीं है. तो हमने ये पढ़ा था मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग. फिर हमने प्रॉफिट एंटिटी, मतलब किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है. दिस वाज द थीम ऑफ दिस. एंड देन पर्पस ऑफ द ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड, हमें मतलब हमें ये समझना पड़ेगा दैट द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. फिनेंशियल्स को बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, उसका ऑडिट करना एक ऑडिटर की जिम्मेदारी है. ठीक है, द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मींस ऑफ अ रिटन रिपोर्ट, राइट? अगर उसको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तो उसको क्या देखना पड़ेगा कि जो अकाउंट्स बने हैं that are in reference to the entries posted in the books of account. So the accounts have been drawn up with reference to the entries in the books of account. तो हमने इस आंसर को कैसे लर्न किया था? हमने बोला सबसे पहले एंट्रीज डलती है, एंट्रीज के बाद में जर्नल ये अकाउंट्स बनते हैं, तो एंट्रीज के बेसिस पे अकाउंट बनते हैं. तो हमने बोला अकाउंट्स हैज बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. कोई भी एंट्री छूटी नहीं है फ्रॉम इंक्लूजन इन द अकाउंट्स. ठीक है, तो नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन. ठीक है, और जो एंट्रीज डली है दैट आर बैक्ड बाय अप्रोप्रिएट सपोर्टिंग. ठीक है, तो सपोर्टिंग के बेसिस पे एंट्री डलती है, एंट्री के बेसिस पे अकाउंट्स बनते हैं. ठीक है, फिर हमने बोला अकाउंट शुड बी वेरी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. एंड एम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ? नॉट क्लियर. तो मतलब आपके अकाउंट जो होते हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए. ठीक है, इट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, उसमें क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर्स should be in conformity with the accounting standards, and then the financial statement should present a true and fair view. यहाँ पे हमने रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी, जहां पे हमने देखा था ऑडिटर हैज एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझाऊं तो मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग व्हाट वी हैव कवर्ड, इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी विद द व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन. अभी ओपिनियन देने से पहले आपको ये चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी कि अकाउंट्स बने हैं विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. कोई भी एंट्री छूटी नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन.
entries are backed by the relevant supporting, मतलब उनके these are entries posted in the books of account are adequately supported, correct? Then we say that the financial statements are clear and unambiguous, proper classification and disclosure in accordance with the accounting standards. And the statement of accounts is basically statement of accounts gives the true and fair view, true and fair picture of the operational results of the company. Then we learned about the interdisciplinary between auditing and other subjects. So we say that auditing and accounting are brother and sister, right? Auditing reviews the financial statement, which is an output of accounting. ठीक है, तो ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट विच इज एन आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, ऑडिटिंग एंड लॉ के बीच में भी इंटरफेस है. अगर आपको ऑडिट करने से पहले आपको कानून के बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस लॉज भी, टैक्स लॉज भी, करेक्ट. ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, आपको करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी पता होना चाहिए, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था करंट में अभी क्या चल रहा है, ईरान इजराइल की लड़ाई चल रही है. ठीक है, तो इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है ऑन द क्रूड ऑयल कंपनीज, ये हमने समझा था. ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स आर बोथ इंटर रिलेटेड, राइट. ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, वेयर वी लर्न ऑडिटर को डील करना पड़ता है ह्यूमन पीपल के साथ, तो ऑब्वियसली बात है ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस आर इंटर रिलेटेड. देन वी कम ऑन टू द ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स. हमने बोला ऑडिटिंग में वी यूज सैंपल and sample is derived based on the statistical sampling, तो auditing and statistics are related. फिर हमने बोला अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करनी है, वेरिफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री, या फिर या बोल सकते हैं इन्वेंट्री काउंट करता है, तो आपकी मैथ्स एंड लॉजिक्स शुड बी वेरी वेरी साउंड, राइट. देन वी टोल्ड दैट ऑडिटिंग एंड एडीपी आर रिलेटेड, डेटा प्रोसेसिंग आर रिलेटेड for a reason. Now you do computer based audit, right? You do audits in computers, so audit and data processing are both related. Then we said that auditing and financial management is also related for a reason, that working capital cycle, cash flow management, AR payment, AP payment is also covered at the time of auditing. So abhi humne meaning पढ़ लिया interdisciplinary. Then we also in the initial class touched upon the origin of auditing, wherein we say that audit has been derived from the Latin word audere, which means to hear. उस समय पे बोले जाते थे financial statement, तो audit का derivation हुआ वहां से. फिर हमने बोला अर्थशास्त्र में भी 4th century BC में कौटिल्य ने मेंशन किया था what is audit. ठीक है, फिर इनिशियली भारत में 1860 में ब्रिटिशर्स ने ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया, जो कि बाद में जाके सीएजी बना. CAG is responsible for the appointment of the auditor of government companies. फिर ICA बना in year ended 1949. तो ये हमने कवर किया. Then meaning of auditing, then interdisciplinary, then objectives of auditing. So we said SA 200 बोलता है overall objectives of the independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing. तो वो बोलता है क्या objectives है. तो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट whether due to fraud or error, and thereby enabling the auditor to express an opinion that the financial statement are prepared in accordance with अप्लीकेबल एफआरएफ. एफआरएफ हमने क्या समझा था, हमने रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट देखी थी, उसमें हमने देखा था इंड एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. तो हमने बोला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव is to obtain reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling an auditor to express an opinion on the whether the financial statement are prepared in all material respects in accordance with an appropriate applicable FRF, and to report on the financial statement. So two things are the objectives of auditor as per SA 200. As per SA 200 रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है. रीजनेबल और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में क्या होता है. एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज द गारंटी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट रीजनेबल एश्योरेंस is a high level of assurance. We read it in the Reliance annual report, wherein the auditor mentioned that reasonable assurance is a high level of assurance, but it's not a guarantee that the audit conducted in accordance with essays will detect the misstatement. So reasonable assurance और absolute assurance में क्या फर्क है. Reasonable assurance is a high level of assurance, but it's not a guarantee.
अभी चलते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट, दिस इज द एजेंडा फॉर टुडे। ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिट वी विल ट्राई टू कवर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट बहुत सिंपल है, हमें ऑडिट के अंदर वी हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी which are relevant to the financial statements, which are relevant to the financial statement। तो अभी let's suppose हमें क्या करना है, let's suppose if a person is being allocated a task to audit the पेरोल एक्सपेंस। ठीक है, मान लो आप एक आर्टिकल एसोसिएट हो और आपको बोला है पेरोल एक्सपेंसेस का आपको ऑडिट करना है, तो आपको उसका पूरे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। we have to cover all the aspects of the entity, you have to cover all the aspects of the entity, but that should be relevant to the financial statements, that should be relevant to the financial statements। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या करता हूं, let me just show you what do you mean by the term relevant to the financial statements, right? So I will show you what do you mean by the term relevant to the financial statements। ठीक है, तो मैं आपको एक एक्सेल में प्रेजेंट करता हूं। ठीक है, let me show you what do you mean by the term relevant to the financial statements। One second, yeah, let's suppose an article in the firm is being given an area that is known as payroll expense। what he should do, he should understand the process of joiners, कि जब बंदा ज्वाइन करता है तो कैसे प्रोसेसेस फॉलो होती है। ज्वाइनर के टाइम पे क्या होगा, कोई भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका क्या होता है, बैकग्राउंड चेक होता है। ठीक है, बैकग्राउंड चेक, तो ये दिस प्रोसेस इज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ज्वाइनर्स की प्रोसेस इज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब वो बंदा ज्वाइन करता है तो उसके ट्रेनिंग्स भी होती है। ठीक है, ट्रेनिंग्स भी होती है जहां पे उसे बताया जाता है कि ऐसे आपको सिस्टम चलाना है, ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है, राइट? वेदर दिस प्रोसेस इज रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो जवाब आया नहीं, ये वाली प्रोसेस से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई बंदे ने ज्वाइन ही नहीं किया है, अगर मान लो कोई बंदा फिक्टिशियस है, ठीक है, कोई बंदा एक्चुअल में है ही नहीं, लेकिन फिर भी पेरोल मैनेजर ने दिखाया कि he has joined the organization, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट है ना, that would have figured out that he does not, he is a fake employee। तो this background check was relevant to the financial statement, but trainings उसको देना कि भाई कैसे कंपनी में what are the processes, what are the RRO trainings, what are other trainings that are not relevant to the financial statement। तो auditor should cover all the aspects of an entity which are relevant to the financial statement। तो scope of audit means अगर आपको किसी कंपनी का ऑडिट करना है तो आपके अपने ऑडिट में वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं which are relevant to the financial statement। ठीक है, फिर अपन चलते हैं रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो जिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपना ऑडिट ओपिनियन दे रहे हो दैट शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड दैट द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ऊपर पढ़ा कि जर्नल एंट्री पास होती है बेस्ड ऑन दी सपोर्टिंग। ठीक है, तो अभी उन सपोर्टिंग की बात हो रही है, that the information contained in the underlying accounting records and other source data is reliable and sufficient basis for the preparation of the financial statement। अभी हमने बोला एंट्रीज डलती है सपोर्टिंग्स के बेसिस पे, एंट्रीज के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, यही प्रोसेस अभी हमने समझी। तो ये बोल रहा है कि जो अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, चाहे वो बिल हो चाहे वो वाउचर हो, इज रिलायबल एंड सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। तभी आप अपना you should, it's a part of scope of audit कि auditor should be reasonably satisfied, उसको satisfaction मिलनी चाहिए। हमने क्या समझा था, अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अंडरलाइन सपोर्टिंग्स के बेसिस पे एंट्रीज डलती है, एंट्रीज के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, राइट? तो अब हमें वी शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड that the information contained in the accounting records such as bills, voucher, purchase bill, documents, etc. is reliable and sufficient basis for the preparation of the financial statement। अभी अभी उसको कैसे पता चलेगा, क्या वो इंफॉर्मेशन दैट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज सफिशिएंट और रिलायबल, मतलब सफिशिएंट एंड रिलायबल। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है ही नीड्स टू असेस द अकाउंटिंग सिस्टम एंड ऑल्सो स्टडी द इंटरनल कंट्रोल। अभी पहली बार वर्ड यूज हो रहा है इंटरनल कंट्रोल।
अभी इसमें क्या एग्जांपल दूंगा मैं आपको। इंटरनल कंट्रोल्स इट इज गवर्न्ड बाय द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया विच सेज दैट अगर एक कंपनी का पिछले साल में 50 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो उसके ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन देना पड़ेगा। ठीक है, देखो इंटरनल कंट्रोल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, बट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ओनली इन केस ऑफ दोज कंपनीज in which the last year turnover was greater than 50 करोड़ रुपी। ये इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट है फॉर द ऑडिटर। ठीक है, तो अभी क्या है, मुझे देखना पड़ेगा दैट रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने बोला मेरे लिए जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है that should be I should obtain a reasonably I should be reasonably satisfied that the accounting records based on which the financial statement have been prepared are sufficiently reliable and these are sufficient for the preparation of the financial statement। तो अब मैं ये कैसे जजमेंट ड्रॉ कर पाऊंगा? only once I only once I understand the accounting system and the internal controls and carrying by appropriate test। तो मतलब सबसे पहले क्या होगा, the auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of financial information। financial information से मतलब क्या है, underlying accounting records का। ठीक है, तो अभी सबसे पहला फ्रेज क्या बोलता है, the auditor should be reasonably satisfied that the information contained in the underlying accounting records and other source data is reliable and sufficient basis for the preparation of the financial statement, right? The auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of the financial information by making a study and assessment of first point क्या है, that is accounting system, then वो internal controls पढ़ता है, and by carrying out appropriate test, inquiries and procedures। तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है भी है और उसके लिए सफिशिएंट भी है? तो वो अकाउंटिंग सिस्टम्स को समझेगा, वो इंटरनल कंट्रोल्स को समझेगा एंड वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करेगा। अभी आपके लिए सब चीजें नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में वी विल अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, ठीक है, ऑफ ऑडिट, हाउ टू डू दिस। बट फॉर दिस क्लास यू जस्ट ट्राई टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट कि अगर उसको ये देखना है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर सफिशिएंटली रिलायबल, are basically reliable and sufficient information for the purpose of expressing an opinion, तो उसको अकाउंटिंग सिस्टम देखना पड़ेगा, उसको कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे और उसको टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, उसको अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली स्कोप ऑफ ऑडिट है। अभी चलते हैं, उसके स्कोप में ये भी आता है टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द प्रॉपर डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो his scope also covers that the relevant information for the users of the financial statement is properly disclosed in the financial statement। So relevant information is properly disclosed, correct, is properly disclosed in the financial statement। He should also keep in mind applicable statutory requirement in this regard। तो इसलिए मैं आपका अभी I would like to draw your attention towards schedule 3 division 1। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दी गई है फॉर अ कंपनी विच इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सारे हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स अपन टच कर रहे हैं कि schedule 3 division 1 में ये this is not written in your books, right, but I am trying to give you the concept that the disclosure requirements are covered by the law। अभी भारत में कौन सा लॉ है? schedule 3 division 1। वहां पे बोला गया है कि यू हैव टू डिस्क्लोज these many थिंग्स, लाइक आपको ट्रेड रिसीवेबल की एजिंग देनी है, तो ये दिस इज अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। मैं आपको दिखाता हूं, ट्रेड रिसीवेबल की आपको एजिंग देनी पड़ती है इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, ये दिस इज अ गाइडेंस नोट ऑफ आईसीआई। तो schedule 3 division 1 covers the entities which are covered as per accounting standards। तो अभी देखो ट्रेड रिसीवेबल्स में आप देखोगे ना, 1 second, aging schedule 3 division 1 for the short term loans,
150। तो देखो ये पूरे सारे लिस्ट ऑफ डिस्क्लोजर्स है जो होने ही होने चाहिए आपके। तो रिसीवेबल्स में जैसे आपको या ट्रेड पेबल में मैं दिखा देता हूँ। ट्रेड पेबल में आपको वो बेसिकली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि व्हाट इज द एजिंग। तो मतलब शेड्यूल 3 डिवीजन 1 बोलता है। तो बेसिकली आपको अब जैसे एमएसएमई का ये डिस्क्लोजर है, ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? इट इज गवर्न्ड बाय द लॉ। तो यही वो चीज बोल रहा है कि the relevant information is properly disclosed in the financial statement, and he should means auditor should also keep in mind applicable statutory requirements in regards to the disclosure। ठीक है। अभी अब कैसे वो इंश्योर करेगा कि सारे डिस्क्लोजर्स हुए हैं? तो ही शुड आल्सो इंश्योर that judgments made by the management in the preparation of the financial statement is also appropriately disclosed। तो judgment made by the management is also appropriately disclosed। So let's move on to some listed company financial। तो मैं आपको एक कंपनी के financial दिखाता हूँ, that is uflex limited। ठीक है। uflex limited मैं आपको इसके financial दिखाता हूँ, या कोई भी कंपनी आप listed कंपनी खोलो। ठीक है। उसमें अगर आप जाओगे एनएससी की साइट पे चलते हैं सबसे पहले। एनएससी की साइट पे अभी अपन जाते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। तो अभी हमने पढ़ा शेड्यूल 3 डिवीजन 1 बोलता है कि कुछ मिनिमम डिस्क्लोजर देने, राइट। देन वी कवर्ड कि बेसिकली शेड्यूल 3 डिवीजन 1 विच इज द कंपनीज एक्ट। ठीक है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि ये डिस्क्लोजर्स आपको देने हैं। इट्स अ बिग लिस्ट ऑफ डिस्क्लोजर्स। ठीक है। देन financial statement should disclose the judgments made by the management। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जजमेंट्स कहाँ पे कंपनी डिस्क्लोज करती है। तो आई एम जस्ट सर्चिंग यूफ्लेक्स लिमिटेड। ठीक है। यूफ्लेक्स लिमिटेड। let's search it and find out। let's look in the historical data। No, let's look into the trade info, and then let's look into the annual reports। Perfect, right? We are here now. We need to download this annual report, so I'm just downloading it. Wait for, bear with me, this download. It's just downloading 1 minute। Yeah, it's almost done। Yeah, let's open it। Yeah, perfect। So let's read the management judgment section, correct? So if you read through the financial statement, let me just directly jump on to SEBI, then this governance leadership and insight। Let's just go through. Yeah, this is the balance sheet, correct? Then coming on to the notes to accounts, like, yeah, basis of use of, so there is a para called use of estimates and judgments, right? So here management list all those areas where they feel that they may apply some judgment, right? So they would like they will critical accounting judgments। So one is useful life of depreciable assets। So management feel that the assessment of useful life involves some judgment। Obviously, it would involve some judgment because you can't assess as of now that how much long a particular asset would last। So they consider the following things as to be the judgmental area: provision and contingent liability, impairment of assets। So these are the all areas where they feel that the management has made judgment। So auditor needs to ensure that all those areas where judgments are involved have been appropriately disclosed in the financial statements like this, correct? So this point covers this aspect, right? The auditor then evaluates selection and consistent application of accounting policies। It evaluates selection and consistent application of accounting policies by management, whether such a selection is proper, and whether the chosen policy has been applied consistently on a period to period basis। अभी ये क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों हमने चूज करी? लेट सपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, लेट अस जंप ऑन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है? यू कैन वैल्यू इन्वेंट्री
either at FIFO method or weighted average cost method, ठीक है। लेकिन कंपनी ने चूज किया FIFO मेथड, तो कंपनी के पास एक रैशनल होना चाहिए why FIFO method best represents the company's value of the inventory, ठीक है। तो अभी आपको समझ रहे हो, मतलब sometimes standards allow use two choices, right? It can be either FIFO or weighted average, right? But the company has chosen FIFO method. Then the companies, you can say, the auditor needs to ensure that the financial statement disclose that, yeah, this is the accounting policy choice made by the company, and the same has been consistently applied, right? It should not be like in the 1 year I've used FIFO, then another year I've weighted average, and again FIFO, right? So that is the aspects of audit. So we covered definitely the scope of audit. तो अभी अपन ने क्या बोला, coverage of all the aspects of the entity which are relevant to the financial statement. Then he should cover that the financial information or the financial information that has been provided to him is reliable as well as sufficient, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, it's reliable and sufficient। तो reliable और sufficient वो कैसे चेक करेगा, वो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, he has to understand the accounting system, he has to understand the controls, and then he need to carry out the appropriate test, inquiries, and procedures as required in accordance with essays. But he needs to be reasonably satisfied that the financial information used in the preparation of the financial statement is sufficiently reliable for the purpose of his audit, ठीक है। अभी प्रॉपर डिस्क्लोजर, ही नीड टू एंश्योर। अभी इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने यूफ्लेक्स की एनुअल रिपोर्ट देखी, जहां पे हमने देखा द ऑडिटर शुड एंश्योर कि जहां जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है ना मैनेजमेंट की, दोज एरियाज आर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज। ही शुड एंश्योर ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन as required by both the statute as well as the understanding of the business is appropriately disclosed. Relevant information can be either statutory driven like schedule 3 division 1 या फिर कैसे भी, मतलब it should ensure that the relevant information is appropriately disclosed in the financial statement. Then the auditor also evaluates the selection of the accounting policy, why a company has selected a particular accounting policy and whether it has applied it on a consistent basis. Obviously बात है, अगर आपके financial statements are prepared on a historical financial statements, right? तो आपका जो audit भी होगा वो भी उन financial statements के ऊपर ही है। तो audit would also be done on the historical financial statements. So that is a simple point that has been given in the study mat. So let us try to summarize what is covered in the scope of audit and what is not covered in the scope of audit. So the audit should cover all the aspects of the entity, but that should be relevant to the financial statements. यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया, हमने बोला जॉइनर की बैकग्राउंड चेक प्रोसेस तो रेलेवेंट है, बट जॉइनर्स की ट्रेनिंग might not be relevant from the financial statements point of view, ठीक है। joiners का background check is very important from the financial statements point of view because that assures us कि भाई employee exist, right? But अगर let's say employee ने कोई एक ट्रेनिंग नहीं करी, that does not impact the financial statement. तो हमें we have to cover all the aspects of the entity which are relevant to the financial statement. Then we should evaluate that the financial statement that has been supplied by the entity to us is sufficiently reliable and it's sufficient for us to conclude the audit, right? For this, we should obtain the understanding of the accounting system, then we should obtain the understanding of the internal control, then we should also carry out the appropriate tests, including inquiries and procedure. The auditor makes a judgment of reliability and sufficiency of the financial information by making a study and assessment of the accounting system, कैसे controls है, and carrying out the appropriate tests, inquiries, and this. Proper disclosure of financial information is also the one of the aspect of the audit, and auditor needs to ensure that all the relevant information has been disclosed in the financial statement. Relevant information can be derived, one from the statutory requirement and second based on the developments in the entity, right? Let's suppose company में आग लग गई है, तो this is a relevant information for the users. Even if let's say no standard, although one standard requires disclosure for it, but let's say in India, let's say the Schedule 3 Division 1 or the accounting standards do not require any disclosure for it. But this is still
it remains important for the users to understand the financial statement. So the relevant information to be disclosed in the financial statement can be derived either from the law, like Schedule 3 Division 1, accounting standards में भी disclosure requirements दिए हो सकते हैं, या फिर business developments that are to be disclosed in the financial statement. तो disclosures आपको relevant information का करना है, आपको ये देखना है, ensure करना है as an auditor that all the judgments or material judgments made by the management in the preparation of the financial statement has been appropriately disclosed. ठीक है? Then the auditor evaluates the selection and application of accounting policies and evaluates whether the same has been applied on a consistent basis. So proper disclosure of financial statement, reliability and sufficiency of financial information, and coverage of the all aspects of the entity relevant to the financial statement. Then you need to obviously be learned in both the objectives of audit as well as the meaning of the audit, that the auditor need to express an opinion on the financial statement. But what are not the responsibilities of the auditor? Preparation of the financial statement and presentation of the financial statement is not the responsibility of the audit, but he needs to ensure that there are proper disclosures in the financial statement, right? उसका काम बनाना नहीं है. अगर आप पढ़ोगे ना यहाँ पे this what we have learned earlier, that the preparation and presentation of financial statements of an entity is the responsibility of the management. तो वो उसकी responsibility नहीं है. कुछ बहुत task ऐसे है that are not in the competence of auditor, like assessing the useful life of a building structure, like civil structure की life बताना. So that is not something out of the scope. वो civil engineers कर पाएंगे, right? We are not the appropriate persons to do it. So these are not expected to be done by a CA कि वो एक building की structure का life बता दे कि भाई क्या life होगा, right? And we are also not an expert in authentication of documents. Let's say management ने आपको कोई deed दी, ठीक है, और बोला कि ये सही copy है, right? You should see that it is signed, but आप ये नहीं बता सकते कि मतलब पता चले उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी है, सिर्फ नीचे सिग्नेचर चेंज कर दिया गया, राइट? तो you are not an expert in the authentication of documents, but yeah, you are sometimes you apply your professional judgment, like कि जो एग्रीमेंट आपको दिया है वो साइंड है, बट यू आर नॉट एक्सपर्ट इन इट, राइट? आप ये नहीं बता सकते कि ये फर्जी साइन है, तो वो सारी चीजें हैं. तो यू आर नॉट एन एक्सपर्टीज इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. Then investigation. तो audit is not investigation. ठीक है? इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन में यू हैव अ पावर ऑफ सर्च, मतलब आप कभी भी जाके वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है? आप किसी से भी पूछताछ कर सकते हो, आप किसी को भी ओथ पे बुला सकते हो कि भाई कसम खा भाई कि जो बोला है वो तुमने सच बोला है. तो ओथ, कभी भी सर्च, ये सारी पावर होती है इन्वेस्टिगेशन में. जब आप इनकम टैक्स में रेड पड़ती है ना, तो वो सर्च भी करते हैं, ओथ पे भी दिलवाते हैं, सर्च एंड सीजर, नो वन कैन मूव आउट. आप सबने रेड मूवी देखी होगी, राइट? तो जब वो 2 दिन 3 दिन वो रेड चल रही होती है, नो वन कैन मूव इन मूव आउट, ठीक है? तो इट्स ऑल स्टैटिक, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा. So investigation has way more power than an audit. An audit is not an official investigation into the alleged wrongdoing. He does not have any specific legal powers. अगर आप देखोगे इनकम टैक्स में जब इन्वेस्टिगेशन होता है, सर्च एंड सीजर, तो उसमें अलग लॉ ने पावर दे रखी है, इनकम टैक्स लॉ ने, ठीक है? बट ऑडिट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल पावर्स ऑफ सर्च और रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑन ओथ, which may be necessary for carrying out an official investigation. So audit is not investigation. Investigation is a critical examination of the accounts with a special purpose. It's a critical examination. Raid movie में क्या करता है वो पूरे नीचे खोद रहा है, देख रहा है, सारे accounts को verify कर रहा है. It's a critical examination with a special purpose. For example, if a fraud is suspected and it is specifically called upon to check the accounts whether the fraud really exists, it takes character of a investigation. ठीक है? तो मतलब मैंने आप क्या बोला? What is in the scope of audit? Scope of audit covers all the aspects relevant to the financial statement of an entity. The financial information that you have got should be sufficiently reliable and it should be sufficient for you to conclude the audit. And then you also need to ensure that the proper disclosures are there in the financial statement, but
the preparation and presentation of the financial statement is not your responsibility, but you need to ensure that the proper disclosures are there in the financial statement. Disclosure should be of the relevant information, and there might be some circumstances in which the law requires that you disclose these many information like Schedule 3, Division 1, and there might be some obviously judgments of the management needs to be disclosed appropriately, right? So that is what we have learned, and the auditor should ensure that the accounting policy selection process of the management is appropriate, that the management evaluates which method to be applied, whether FIFO or weighted average, and the policy is applied on a consistent basis. That is that covers the aspect of proper disclosure of financial information. Then we said that obviously you need to express an opinion, so it is pretty much covered in the scope of the audit. But yeah, sometimes duties outside the scope of the audit is like assessing the useful life of a civil structure, right? So that is something not in the scope of the auditor. Then it's you can say expertise in the authentication of documentation is also not in the scope, and then investigation is also not in the scope. Investigation is a critical examination of the accounts with a special purpose, right? So it involves having oath, किसी से रिटर्न स्टेटमेंट लेना, सर्च करना, सीजर करना, कभी भी पहुंच जाना। रेड में आपको पता है सुबह 4 बजे रेड शुरू हो गई थी, तो दिस इज इन्वेस्टिगेशन। इट हैज पावर डिराइव्ड फ्रॉम लॉ, राइट? इन्वेस्टिगेशन इज वे बियॉन्ड ऑडिट, ठीक है? उसमें तो कुछ भी मतलब हर चीज पे यू कांट इवन ट्रस्ट अ डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। यू नीड टू हैव द oath of the people that जो मैंने कहा सच कहा। तो दिस इज इन्वेस्टिगेशन, बट ऑडिटर डज नॉट हैव द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? So that is how it needs to be learned. So there are 3 case scenarios. I think we will keep this video short. Let us try to cover these questions along with inherent limitations in the next part. So that's all for today. Thank you guys for joining in. Have a good day.